Hello, my dear students. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. Here in this video, I will be starting with the 9th chapter of Mathematics of class 10th, Matrices. This is a very important chapter. And in fact, this is somewhat easy chapter. If you understand this chapter nicely, you can score a good amount of marks of your question paper. In fact, matrices काफी easy भी होता है. तो इसको स्कोर करना बहुत इजी भी है प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. So I hope you are ready with notebook, pencil, pen, whatever is required, and you will also solve the questions, take down the notes as I will be discussing in this video. This is the lecture 1 for this chapter. Now, what is matrix? So when I write matrix, this is singular. And when I say matrix का plural, that is matrices. ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हो गया. अब होता क्या है मैट्रिक्स? इफ आई राइट अ फ्यू नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2 4 5 9, and you see here I have arranged 4 of the numbers in a rectangular manner. This is a matrix, and here I will say that these are the 4 columns. कितने columns है? 4 columns. और कितने rows हैं? There is just one row. So column 1, column 2, column 3, column 4, and here we have just one row. तो मैं बोलूंगा ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें 4 columns है and 1 row है. This is one row. This row has elements 2 4 5 6, and there are 4 different columns. I can also write a matrix like this: 2 9 -6 4 0, maybe again a 2. An element can be repeated also. This is a matrix because this is a rectangular arrangement of numbers. ये एक rectangular arrangement है numbers in form of rows and columns. Now you say how many columns and how many rows are here. Here we have 3 columns. This is column 1, column 2, and column 3. So the first column has 2 elements, 2 and 4. The second column has 2 elements, 9 and 0. And the third column has 2 elements, -6 and 2. And how many rows are here? We have the first row, this, which has elements 2, 9, and -6. And we have another row, which has 3 elements, 4, 0, and 2. So it has 2 rows and 3 columns. तो बिल्कुल समझ में आ रहा है. कॉलम बोले तो वर्टिकल वाले अरेंजमेंट, एंड रो बोले तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. यहां पे भी बिल्कुल वही वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम्स बोलते हैं. 3 कॉलम्स हो गए इसमें, एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं रोज. 2 रो हो गए. तो मैंने यहाँ 2 मैट्रिक्स लिखा है. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल. These are 2 examples of matrix. You can have like a matrix like this also. Why always to start with 2? You can start with any number like 5 9 4 6 3 9 8 4 0 2 6 1. This again is a matrix. Now you people think and tell to yourself, and you see that whether your answer is correct or not. How many columns are there? So is this a column? Are these columns? No, these are not columns. These are rows, right? क्योंकि मैंने अभी बताया horizontal वाले rows होते हैं. So we have 4 rows over here. This is row 1. This is row 2. This is row 3. And this is row 4. And how many columns do we have in this matrix? 3 columns. This is column 1. This is column 2. This is column 3. तो कोई तुमसे पूछे कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स. कितने रोज है? 4 रोज. ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन, दैट इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. इफ आई talk about a single matrix, तो मैं उसे मैट्रिक्स बोलूंगा. बट इफ आई हैव टू रेफर टू मोर देन वन मैट्रिक्स, तो मैं मैट्रिसेस बोलूंगा. सो इन द स्क्रीन आई हैव रिटन 3 मैट्रिसेस. ठीक है, कॉलम क्या हो गया, समझ में आ गया. रोज क्या हो गया, वो भी समझ में आ गया. अब एक टर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स.
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? Suppose I have a matrix whose name is A and it consists of these elements 1, 2, 4, 9, 4, 7. Just for an example. Okay, तो हम मैट्रिक्स का इस तरह से नाम भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखा था ना 2, 4, 5, 9, इसका एक नाम दे सकता हूँ। आई कैन कॉल दिस मैट्रिक्स बी। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी इज इक्वल टू ये वाला। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स तुम्हें समझाया था, नाम नहीं लिखा था। वैसे मैं नाम लिख सकता हूँ। एनी मैट्रिक्स कैन बी गिवन अ नेम। सो मैंने यहाँ देखो एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है 1, 2, 4, 9, 4, 7 और उसका नाम दे दिया है ए। Now this matrix has how many columns? Yes, 3 columns. This is the first column, this is the second column, this is the third column. Okay, column clear है? और rows कितने हैं? 2 rows. This is the first row, this is the second row. So I have 3 columns and 2 rows. Order of a matrix का मतलब है number of rows and multiplied with number of columns. Formula यही होता है. Order of a matrix का क्या formula होता है? Number of rows into number of columns. कितना simple formula है. तो इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अगर कोई तुमसे पूछे बताओ कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 रोज। रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रोज। सो 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3 कॉलम्स आर देयर, राइट? तो 2 इंटू 3। अब इसको 6 नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 अंटिल 6। मुझे यहां बोलना पड़ता है इसको 2/3। हाउ टू रीड इट? इट इज रेड एज 2/3। इसको मैं 6 नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट कॉल दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 6। नहीं, क्योंकि 6 बोलूंगा तो वो क्लियर नहीं हो रहा है ना कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ऐसा भी तो हो सकता है, 3 2 6, ऐसे भी तो होता है। तो 6 बोलने से तो अगर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है तो भी तो 6 हो जाएगा। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। दैट शुड बी क्लियर। सो वी ऑलवेज से number of rows into number of columns. Always number of rows is written first and then multiplied with number of columns. कभी भी हम number of columns को पहले नहीं लिखते। तो एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसका ऑर्डर क्या होगा? 9, 7, 2, 1, 4, 6। और मैं एक बढ़ा देता हूं यहाँ पे, सपोज 4, 7, 2, 4, 1, 4, 6, 9 एंड मे बी वन मोर आई कैन पुट 7, 1, 0, 0। बताओ। So this is a matrix, yes, rectangular arrangement of numbers. इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी रोज डज इट हैव? 3 rows, 1, 2 and 3. So this is the first row, this is the second row, this is the third row. तो रो नंबर को पहले लिखते हैं। So मैं लिखूंगा 3 क्रॉस कितने कॉलम्स है? 4 कॉलम्स, 1, 2, 3 and 4. So 3 cross 4. This is the order. And how do we read it? This is 3/4. The order of matrix B is 3/4. इस तरह से हम बोलेंगे। सो ये जो प्रीवियस मैंने मैट्रिक्स लिखा है इनका ऑर्डर भी फटाफट बोल दो। इसका क्या ऑर्डर होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? वेल देयर इज जस्ट 1 रो। देखो ना, 1 रो है एंड 4 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4। इसका ऑर्डर क्या है सेकंड वाले का? इफ यू सी देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो 2 क्रॉस 3। एंड इसका ऑर्डर क्या है थर्ड वाले का? देयर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, 4 क्रॉस 3। सो ऑर्डर भी मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू सी अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये काफी इजी है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये सारे हो गए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इफ यू सी इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 3, तो इसका प्रोडक्ट होता है 6। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स मस्ट हैव 6 एलिमेंट्स। 2 क्रॉस 3 करोगे तो कितना होता है? 6। और अगर देखो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6 एलिमेंट्स है।
सिमिलरली 3 into 4 is 12, और ध्यान से देखो तो इसमें भी 12 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमारा ऑर्डर m इंटू n है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m इंटू n है, m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं, n डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, m इंटू n है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए mn। mn मींस द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n। तो mn शुड बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक है, यही है। जैसे यहाँ 2 क्रॉस 3 इज 6, सो 6 एलिमेंट्स है। जैसे 3 क्रॉस 4 इज 12, सो 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें भी देखो, जैसे 1 क्रॉस 4 इज 4, 4 एलिमेंट्स हैं। 3 क्रॉस 2 इज 6, 6 एलिमेंट्स हैं। 4 क्रॉस 3 इज 12, 12 एलिमेंट्स हैं। तो यही मैंने लिखा कि m इंटू n अगर ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स शुड बी mn। अब डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलग अलग टाइप्स। ठीक है, why these terms are important? Why should you know the different types of matrices? Because these terms are used often in certain questions. Suppose you get a term square matrix, and if you don't know the definition of square matrix, then you won't be able to do that question at all. तो इसलिए जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उनको समझना काफी जरूरी है। द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मींस इट इज अ मैट्रिक्स which is only one row. सिंपल सा डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो एंड इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, बट रो एक ही है, सिंगुलर रो। तो एक एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूं, सपोज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स इज ए एंड आई राइट 2 9 5। सो दिस इज हैविंग जस्ट वन रो, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि बस एक ही रो है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix which has only one column, has only one column. Now say for example I'm writing a matrix named b and say its elements are 7 4 3. You see how many rows does it have? It has 3 rows, row number 1, row number 2, row number 3. But how many columns does it have? It has just one column, so it is a column matrix. अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन दोनों का मुझे अब बताओ। पहले वाले का ऑर्डर क्या है? तो क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, राइट? अभी अभी बताया था। नंबर ऑफ रोज कितने? इट हैज ओनली वन रो, तो मैं लिखूंगा 1 क्रॉस कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, सो 1 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हमेशा इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यानी मैट्रिक्स के बेस में लिखा जाता है। जैसे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है ना, तो उसको नीचे बेस में हम 2 क्रॉस 3 ऐसे लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तो इसे नीचे में इस तरह से 3 क्रॉस 4 लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखना है तो हम उसे मैट्रिक्स के जस्ट फुट, एट द फुट ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। सिमिलरली इसका ऑर्डर क्या होगा? हाउ मेनी रोज डज इट हैव? 3 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 कॉलम, सो 3 क्रॉस 1। ध्यान से देखो, इसका 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1। ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ rows and columns. A matrix which has equal number of rows and columns is known as a square matrix. जैसे मैंने लिखा C 2 4 9 7। तो देखो इसमें कितने रोज हैं? देयर आर 2 रोज। कितने कॉलम्स है? देयर आर 2 कॉलम्स। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2, तो यानी जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो दिस इज अ square matrix. Similarly, a 3 क्रॉस 3 matrix, a 4 क्रॉस 4 matrix, these are all square matrices. अगर मैं लिखता हूं एक 4 क्रॉस 4 matrix, जैसे 8 5
7210964432 और एक और रोज मुझे बनाना, एक और रो बनाना पड़ेगा 7721. देखो, these are the four columns 1 2 3 and 4. These are the four columns of this matrix, and these are the four rows. This is row 1, row 2, row 3, and row 4. Okay, so here one I'm writing. So you see there are four rows and four columns. Hence, this matrix is a 4 cross 4 matrix, 4 number of rows and 4 number of columns. This is a square matrix. तो समझ में आ रहा है? Next type of matrix is rectangular matrix. Rectangular matrix. Rectangular matrix is a matrix in which the number of rows and number of columns are not equal. Number of rows is not equal to number of columns. जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो मैट्रिक्स है, ये एक rectangular matrix है. This is a rectangular matrix because the number of rows and number of columns are not same. There is one row and 3 columns. Here also this is a rectangular matrix because it has unequal number of rows and columns. 3 rows है, 1 column है. तो ये दोनों एग्जांपल हो गए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के. ये वाला भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. दोनों सेम होगा तो बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. ये भी अलग अलग है, 1 row and 4 columns. So this is also a rectangular matrix. Even this is a rectangular matrix because it has 4 rows and 3 columns. ठीक है? So these are the examples of rectangular matrix. Number 5 is zero or null matrix. Zero or null matrix. It is a matrix in which each element is zero. इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे. Each element is zero. जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 0 0 0. This is obviously a row matrix and also a rectangular matrix and also a zero matrix or a null matrix because it has all the elements zero. ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि सिर्फ वन रो है. ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? देयर इज ओनली वन रो एंड 3 कॉलम्स, सो 1 cross 3. If I write a square matrix 0 0 0 0, this is a square matrix of order 2 cross 2, 2 rows and 2 columns are there. And this square matrix is also a zero matrix. If I write a column matrix 0 0, this is of order 2 cross 1 because 2 rows and 1 column is there. So 2 cross 1. This is a rectangular matrix as well. And this rectangular matrix, which is also a column matrix, is also a zero matrix. So each element is zero. And very important type of matrix is this one, diagonal matrix. इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स. ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, बाकी एलिमेंट्स आर जीरो. ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट the principal diagonal elements are zero. And a very important criteria is it is a square matrix. So it is a square matrix. तो सबसे पहला क्राइटेरिया डायगोनल मैट्रिक्स का होना चाहिए कि द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. A matrix which is not a square matrix can never be a diagonal matrix. So first important condition is that it has to be a square matrix. Second, that if it is a square matrix, then the principal diagonal elements should be non-zero, but all other elements should be zero. What is the meaning of principal diagonal elements?
Now, if you draw a square, suppose I'm drawing, then square has two diagonals. One diagonal is this, the another diagonal is this. तो मैंने जो सेकंड में जो डायगोनल बनाया, अगर मैं नाम कर दूं ए बी सी डी, तो मैंने जो सेकंड में अभी डायगोनल बनाया वो डायगोनल था बी डी, द डायगोनल विच आई ड्रू सेकंड. एंड सबसे पहले जो डायगोनल बनाया था, द डायगोनल विच आई ड्रू फर्स्ट वाज ए सी. ए सी इज नॉट द प्रिंसिपल डायगोनल, बी डी इज द प्रिंसिपल डायगोनल. तो इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो, इस डायगोनल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल. तो जो भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करते हैं वो होने चाहिए नॉन जीरो. अब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं. आई एम राइटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स, से 2 9 4 7. You know, I have a tendency of starting matrices always with 2. That's why whenever I'm writing an example, I'm starting with 2. Anyway, it is not necessary. You can start with any number. Okay, so I have written a square matrix of order 2 cross 2. So the elements in the along the principal diagonal means मैंने अभी एक diagonal draw किया. ये एक square है, ऐसा सोच सकते हो. You can consider it to be a square. और ये हो गया diagonal. तो principal diagonal हो गया. ये भी एक diagonal है, but this 4 9 वाला is not the principal diagonal, but 2 7 को काटने वाला diagonal is the principal diagonal. तो principal diagonal होने चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट्स, और बाकी अगर जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं जीरो बना दूं, तो ये हो गया हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स. Similarly, if I write a 3 cross 3 matrix, say 9 9 8, देखो अब मैंने 9 से स्टार्ट किया. अब मत बोलना सर आप हमेशा 2 से ही स्टार्ट करते. 4, एक नेगेटिव नंबर भी दे सकता हूं, -2 -3 0 say 100 6. This is a matrix of order 3 cross 3. There are 3 rows and 3 columns. Number of rows is always written first, number of columns is always written second. So number of rows is 3, number of columns is also 3. So 3 cross 3. Principal diagonal बोलेंगे तो इसको बोलेंगे. That means 9 -2 and 6 are principal diagonal elements. इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 0. तभी हम बोलेंगे that this square matrix is a डायगोनल मैट्रिक्स. और ये 100 को भी 0 कर देना है. तो देखो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 है तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. आई होप डायगोनल मैट्रिक्स इज क्लियर. ठीक है, तो क्या लिखा है? ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and it must be a square matrix. Now the last type of matrix is unit matrix or identity matrix, the 7th type of matrix. Unit matrix or identity matrix. Now this is also a diagonal matrix. This unit matrix या identity matrix, they are also diagonal matrix. एंड अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स. हमने अभी अभी पढ़ा दैट ऑल द डायगोनल मैट्रिसेस मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अगर हमारा यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये अंडरस्टूड है कि यूनिट मैट्रिसेस मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो. अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो 1 होता है. तो प्रिंसिपल diagonal elements must be equal to 1 and all other elements obviously 0 होना चाहिए, because then only it is a diagonal matrix. Diagonal matrix का मतलब ही है कि all the other elements must be 0 except for the principal diagonal elements. But here the principal diagonal elements must be equal to 1. जैसे ये पिछले वाले एग्जाम्पल में इन एलिमेंट्स को मैं अगर 1 कर देता हूं, मींस द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स should be 1 and other elements should be 0. Such a diagonal matrix is known as unit matrix. तो जैसे मैंने लिख दिया 1 0 0 1. You see the principal diagonal में जो elements हैं वो 1 है
बाकी 0 है. This is definitely a diagonal matrix, but the diagonal elements are 1. Similarly, if I write unit matrix of order 3, ये तो यूनिट, ये वाला क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 क्रॉस 2. सिंपली 2 भी बोलता हूं, अगर 2 क्रॉस 2 है ना तो इसको ऐसे बोला जा सकता है, इट इज ऑफ ऑर्डर 2. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिंपली एक बार बोलते हैं. जैसे अभी अगर मैं बोलूं द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट मैट्रिक्स विच आई एम गोइंग टू राइट इज 3, इसका मतलब ही है कि इट इज 3 क्रॉस 3. तो कैसे लिखूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि देखो डायगोनल वाले एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो है, 1 है, बाकी सारे 0 है. तो ये तुम्हें आना चाहिए. अगर मैं तुमको बोलूं राइट यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब है कि 2 क्रॉस 2, एंड यू शुड बी एबल टू राइट दिस. इफ आई टेल यू राइट अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, you have to understand it is 3 cross 3 and you have to write this. If I say unit matrix of order 4, तो अपने से ट्राई करो. Unit matrix of order 4, that means the order is 4 cross 4. सिर्फ 4 बोलूंगा तो 4 क्रॉस 4 समझ जाना पड़ेगा. स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सिर्फ एक ही बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. इट इज अंडरस्टूड दैट यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4. तो कैसे होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. ये हो गया हमारा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे 0 है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन लेक्चर 1. आगे के लेक्चर में, जो मैं लेक्चर 2 इस चैप्टर का डालूंगा, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. So let us meet in the next lecture of this chapter. God bless you, everyone. Take care. If you have not subscribed to my channel, please subscribe to it, and also press the like button to support me. Thank you, all of you. God bless you.